Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhokre and now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. Hope you are watching our videos regularly. If you are watching video for first time at the minute, you please subscribe to our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notifications. Friends, today we are going to learn for CA Intercourse Accountancy subject, topic name Redemption of Debenture, question number 5 which is on your screen. Let's read the question. Swati Associates Limited has issued 10,000 12% debentures of rupees 100 each on 1/1/2000 X1. These debentures are redeemable after 3 years at a premium of rupees 5 per debenture. Interest is payable annually, that means interest will be paid every year on 31st December. On 1st October 2000 X2, it buys 1500 debentures from the market at rupees 98 per debenture. These are sold away on 30th June 2000 X3 at rupees 105. These debentures, they have identified कि ये डिबेंचर खरीदा है और यही बेचा है. समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. वो पर्टिकुलर लॉट आपने बेच दिया तो डायरेक्टली उसका कॉस्ट अप्लाई हो जाएगा. On January 1, 2000 X3, it buys 1000 debentures at rupees 104 per debenture from the open market, and these were cancelled on 1st of April 2003. Right? Then they gave you on 1st October 2000 X3, it buys 2000 debenture at rupees 106 per debenture from the open market. These debentures along with the other debentures are redeemed on 31st of December 2000 X3. Prepare a relevant ledger account showing the above transactions. Working should form the part of your answer. Also show the extract of statement of P&L account, P&L, statement of profit and loss, own debenture account for the year 2000 X1, 2000 X2 and 2000 X3. तो ओन डिबेंचर आप जब भी प्रॉफिट और लॉस करते हो, वो प्रॉफिट लॉस आपको पीएल अकाउंट में दिखाने का और कैसे दिखाने का वो आपको पूछा है उन्होंने. ठीक है. सो इन दैट वे वी विल प्लान आवर टुडेज वर्क. रिलेवेंट लेजर अकाउंट मींस फर्स्टली आई विल हैव अ डिबेंचर अकाउंट, देन आई विल हैव अ ओन डिबेंचर अकाउंट एंड देन वी विल हैव अ एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. Students, we are ready with the formats. Now let us read the question. Swati Associates Limited has issued 10,000 12% debentures of rupees 100 each on 1/1/2000 X1. These debentures are redeemable after 3 years at a premium of rupees 5 per debenture. That means जब redeem करना होगा तो we'll pay them 5 rupees more. Right, so debentures are issued at par but they are redeemable at premium. But one thing I want to mention here, when company reserve a right to buyback, means company can purchase own debenture at any point of time. In that case, this premium will not be provided. Okay, so this premium will be recorded only when it is actually incurred. Otherwise, what we have learned in the issue of debenture topics at your lower level, okay, this will be recognized at the time of issue. But in this question, it will not be recognized.
On what day debentures were issued? 1/1/2000 अपना सिंपल एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट. So credit side of debenture account. By bank account. How many debentures we have issued? We have issued 10,000 debentures of rupees 100 each. So we have received 10 lakhs rupees. 10 lakhs. So we have issued the debenture. So we have to consider all transactions which are occurring between 1st January X1 to 31st December X1 for first year. If you look at the other sentences, 2001 का कोई भी transaction नहीं है. That means in 2001 we will just pay debenture interest which will be debited to profit and loss. So debenture interest will be paid. Entry for debenture interest paid will be debenture interest account debit to bank. Sir, how it will be calculated? What was the amount of debenture face value? 10 lakhs. Rate of interest is 12%. We are paying annually. So I can just say multiply by 12 by 12. 1,20,000. In this way, we have paid debenture interest for first year and first year has come to an end. When this year comes to an end, interest account will be transferred to profit and loss. It will be transferred to PL account and in PL account it will be represented under finance cost. ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? Because आपको PL account का extract भी दिखाने का है for 3 years. Okay, so 2001 का जब आप extract दिखाओगे तो PL account में expenditure में ये amount आ सकता है. ठीक है? Let's close debenture account. This closing balance will become opening balance in the year 2002 on 1st January 2000 X2. $10 lakhs. Question is asking you prepare extract of PL account. PL account extract we will do later on together for all 3 years. So at the minute we will focus only on our calculations because if we make a mistake in calculation it will actually harm our answer. Okay, so let's go to the next year. 2000 X2. What's happening here? On 1st October 2000 X2, it buys 1500 debentures from the open market at rupees 98 per debenture. Importantly, they have not mentioned whether it is X interest price or cum interest price. So we'll presume by default, if nothing is mentioned, we'll presume it is X interest price. These are sold away on 30th June 2000 X3 at rupees 105 per debenture. So we will consider sale transaction in the year 2000 X3. At present we will do only purchase transaction. Okay, so let's come to the presentation part. Rather we have to prepare a working note for purchase of own debenture. When you purchase the debenture, you divide it in 3 parts. Rather we want 3 details: face value, interest and cost. Look at the question. How many debentures we have purchased? 1500 debentures जिसका face value 100 है. Interest will be calculated on face value. Last interest before this 1st October, last interest we have paid on 31st December 2000 X1. That means from January onward up to 30th September, we need to pay the interest to the person who is selling the debenture to us. So I will calculate interest for 9 months. So calculation we have to do.
These debentures are purchased at 98 rupees ex interest, we are assuming. This amount will be our cost, ex interest price only will be our cost. 1,47,000. When these investments are purchased, interest on own debenture account debit to bank. Face value is only memorandum information. ठीक है? As per our working note, my face value is 1,50,000, my interest is 13,500 and my cost is 147,000. So we have acquired debentures in this year. In the year 2000 X2, there is no other transaction. So at the end of the year, I need to pay debenture interest. While paying the debenture interest, I will divide my all debentures in two parts: own debentures and outside debentures. Own debenture का interest आपको pay नहीं करना है, but it is credited to the interest on own debenture account, and outsider का amount हम लोग को pay करना पड़ेगा. My total debentures face value is 10 lakhs. तो आप बोलोगे 10 लाख किधर से आया? हम लोगों ने डिवेंचर अकाउंट रखा था, टोटल डिवेंचर हमारे पास कितने के? 10 लाख के. ठीक है, उसमें से कुछ डिवेंचर्स हमारे पास एज ए इन्वेस्टमेंट है और कुछ डिवेंचर्स प्रैक्टिकली आउटसाइडर के पास है. ओन डिवेंचर्स वी आर होल्डिंग फेस वैल्यू 1,50,000. But obviously outsider will be holding 8,50,000. So at the rate of 12% for full year, so our own interest comes to 18,000 and outsider interest comes to 1,02,000. ओन डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए एंट्री आएगा आपका डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, और आउटसाइडर के लिए एंट्री आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो आई एम नोटिंग इट. Debenture interest account debit to bank. So these two entries will be posted. $18,000 and 1,02,000. 18,000 will give second effect in our own debenture account. Right? So in this way our second year comes to an end, because in 2002 there is no other transaction. Check the entire question. 2002 we have just purchased the debenture, there is no other transaction beyond this purchase, and of course last year that annual interest. Okay, उसके अलावा और कोई transaction नहीं है. तो now time is to close your account. Closing balance of this year, which is a balancing figure. This will become opening balance on next day, that is on 1/1/2000 X3. As far as interest is concerned, it is saved interest which will be credited to the PL account as a other income.
our net saving is 4,500 because while crediting 18,000 we have also debited 13,500. So this net amount we will transfer to P&L account as our other income. Now we are closing debenture interest account. So this 1,20,000 is transferred to P&L account, which is balancing figure. You can notice interest is same in both the years because debenture amount outstanding is also same in both the years. ठीक है? We are closing debenture account. This closing balance will become opening balance on 1/1/2000 X3. $10 lakhs. Okay, so we have entered now in the year 2003. So 2003 में क्वेश्चन में जो chronological order दिया है, जो डेट का ऑर्डर दिया है, we will follow that. In 2003, the first transaction which I can see is this. On 1st January 2000 X3, it buys 1000 debenture at 104 per debenture from the open market. These are cancelled on 1st April 2003. तो इसका कैंसलेशन हुआ है 1 अप्रैल 2003 को. तो आराम से आप चेक करो, 1 जनवरी को खरीदा है और 1 अप्रैल को इसको क्या किया है, कैंसिल किया. और उसके बाद में ये पहले वाले लाइन में, दैट इज सेकंड पॉइंट में, ये जो सेल अवे हुआ है वो बाद में देखेंगे. पहले तो इसको परचेज भी किया और कैंसिल भी किया, लेकिन कौन सी तारीख को कैंसिल किया है, अप्रैल 1. ओके, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर, वी विल मेक अ वर्किंग नोट. We need three things here: face value, interest and cost. We purchased how many debentures? 1000 debenture. ₹1,00,000 फेस वैल्यू बनता है. सर क्या इसका इंटरेस्ट रहेगा? आप चेक करोगे तो आपका लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर X2 को पे हुआ है और ट्रांजैक्शन इज ऑन 1 जनवरी, तो इंटरेस्ट विल नॉट बी देयर बिकॉज इमीडिएट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इंटरेस्ट विल बी नील. इट वाज परचेज फॉर 104. क्वेश्चन ने क्लियरली दिया 104 में खरीदा है, तो 104 रुपए आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट, बिकॉज हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे जो भी कोटेड प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट है. रादर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कम इंटरेस्ट डजंट मैटर बिकॉज इंटरेस्ट है ही नहीं यहाँ पे. तो 104 इज आवर अमाउंट विच इज टू बी कंसिडर्ड. So this is what our purchase is there. My entry will be own debenture account debit, interest on own debenture account debit to bank. तो interest on debenture तो नहीं ले, लेकिन debenture account में कितना जाएगा, own debenture में 1,04,000 to bank. ₹1,04,000 में खरीदा, ठीक है. और ये डिवेंचर आपने कैंसिल कब किया स्टूडेंट? आपने कैंसिल किया इसको 1 अप्रैल 2000 X3 को. तो 1 अप्रैल 2000 X3 को जब आप कैंसिल करोगे तो सबसे पहला काम आपका होगा उस पीरियड तक का डिवेंचर इंटरेस्ट काउंट करना और फिर कैंसिलेशन कंसीडर करना, ठीक है. तो वी आर कंसीडरिंग इंटरेस्ट only from 1st January to 31st March, that too only on this 1 lakh. तो इसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 1st April 2000 X3 is our cancellation date. Up to that day my interest on 1 lakh will be counted. On 1 lakh at the rate of 12% for 3 months it comes to 3,000. Debenture interest account will be debited for this. $3,000, right?
Then we cancel the debenture. When you cancel the debenture, your entry will be debenture account debit to own debenture account, and this entry will be recorded at 1 lakh rupees, which is the face value, because face value, that is the liability cancelled, is only the consideration for this. My entry will be 12% debenture account debit to own debenture account. Amount will be rupees 1 lakh. ₹1 lakh. ओके, तो ये जो 1 लाख रुपीज है ओन डिवेंचर अकाउंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट होगा. Cancelled. Okay, now when you cancel the debenture, there will be either a profit or there will be a loss. Now you can notice we have purchased the debentures for rupees 1,04,000 and we have cancelled at a liability amount of 1 lakh, so we incurred a loss. And if there is a loss on cancellation, we will debit to the P&L account, and if there is a profit on cancellation, we will credit to the capital reserve. तो यहाँ पे लॉस होगा तो it will be charged to P&L account. That is 1,04,000 cost we incurred and 1 lakh liability we have cancelled, so we overpaid 4,000, and that 4,000 we will debit to profit and loss as a other expense. How I got 4,000? 1,04,000 minus 1 lakh. 1 लाख रुपए हमारा लाइबिलिटी कैंसिल हुआ है और 1,04,000 का हम लोगों ने कॉस्ट इनकर किया है. आई बिलीव यहां तक आपको समझ में आया होगा. दैट मीन्स कैन आई से एट द मिनट वी आर होल्डिंग ओनली रुपीज 1,50,000 का ओन डिबेंचर, एंड इफ आई सी द ओवरऑल सिनारियो, आवर डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग आर 9 lakhs. हाउ? 10 lakhs minus 1 lakh. So this you should keep in the mind. Then we are proceeding further now. क्वेश्चन में एक बात दे दिया उन्होंने कि ये डिबेंचर परचेज भी किया और कैंसिल भी हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन अपने हो गए. ठीक है, अभी ये 30 जून में क्या किया था आपने, जो 1 अक्टूबर 2000x2 को जो डिबेंचर्स आपने खरीदे थे वो आपने क्या किए, सेल आउट कर दिए एट ₹105 पर डिबेंचर. तो यहाँ पे सेल ट्रांजैक्शन है. यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन है? सेल ट्रांजैक्शन है. याद रखना, सेल ट्रांजैक्शन में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम लोग स्ट्रेट पे पीएल अकाउंट में लिखेंगे, वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा. तो विल डू फर्स्टली सेल ट्रांजैक्शन का वर्किंग नोट एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि जो डिबेंचर 1 अक्टूबर 2000x2 को परचेज किए थे वो सेल हुए, right? So I am writing it for our reference so that when I want to do some calculation it will be easier for me. 3 things I need when you sell the debenture. That time also I need 3 things. That 3 things are face value, interest, cost. Interest will be calculated up to the date of sale, that is 30th June. January to 30th June comes to 6-month period, so for 6 months I will work out. And these are sold away at ₹105. It is 157,500. Importantly, we are selling debentures, so for me ये cost is nothing but basically a selling price for me. What was my cost when I purchased these debentures? We have a working note number 1. That time we incurred a cost of 147,000 and we recovered selling price of 157,500, so we have incurred a profit. So profit on sale is equal to selling price minus cost. What was our selling price, students? आप अगर सेलिंग प्राइस देखोगे तो अपना सेलिंग प्राइस बनता है 157,500. लेकिन यही डिबेंचर जब खरीदे थे उस टाइम पे कितना कॉस्ट इनकर किया था आपने इनकर किया था 1,47,000.
So how much profit we will gain? 10,500. ये 10,500 जो है, ये 10,500 सेपरेटली हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट के क्रेडिट में। तो दो ट्रांजैक्शन इन ऑल आई हैव टू कंसीडर, फर्स्ट इज सेल एंड सेकंड इज प्रॉफिट। तो सेल का एंट्री पहले मैं डिसाइड करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर and to own debenture account it will be recorded selling price, and for profit my entry will be reversed, own debenture account debit to profit and loss account. Okay, so I will record two transactions separately from same working note. ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पहला सेल ट्रांजैक्शन। We recorded sale, that is bank account debit to own debenture account and to interest on own debenture। ये कॉलम फेस वैल्यू का जो है वो अपने लिए मेमोरेंडम है। सेकंड, we need to record a profit, own debenture account debit to profit and loss account। याद रखना ये प्रॉफिट ऑन सेल है, इसके लिए पीएल अकाउंट में क्या है, अगर यही प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन होता था तो आई वुड हैव टेकन इट टू द कैपिटल रिजर्व। सो बी केयरफुल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज ऑलवेज एडजस्टेड इन पीएनएल। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन वी टेक एज द कैपिटल रिजर्व एंड लॉस ऑन कैंसलेशन वी विल टेक इट टू द पीएनएल अकाउंट। तो ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव सोल्ड रिमेनिंग ऑफ द डिबेंचर्स। दैट मींस कैन आई से एट द मिनट एज अ इन्वेस्टर आई एम नॉट होल्डिंग एनी ऑफ द डिबेंचर। मेरे जो बाकी के डिबेंचर थे वो भी मैंने बेच दिए, तो अभी पूरे के पूरे डिबेंचर्स आउटसाइडर्स को बिलोंग करते हैं। तो वी हैव इनकर्ड अ प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट वी हैव ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन व्हिच इज गिवन on 1st October 2003 it buys, means we purchased 2000 debenture at 106 per debenture from open market, and these debentures along with the other debentures were redeemed on 31st December X3। आराम से पहले खरीदा है तो उसका वर्किंग नोट बनेगा। When you purchase the debenture, as usual I need three information: face value, interest and cost। सो स्टूडेंट्स वी हैव परचेज डिबेंचर्स, हम लोगों ने डिबेंचर्स खरीदे हैं, ठीक है। एंट्री आएगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ओन डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा टू बैंक अकाउंट। We have purchased the debentures on 1st of October 2003। क्वेश्चन में आगे दिया है these debentures along with other debentures are redeemed on 31st December X3। Now before I go toward the end of this question, मैं एक बात बोलूंगा, ये खुद के डिबेंचर, इसको पे नहीं होगा, ये कैंसलेशन होगा, ठीक है। एंड बिफोर दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 31st December इज माई इंटरेस्ट डेट। So if I consider interest directly that will be fine, and then I will consider the cancellation and redemption, ठीक है। तो before that 31st December 2003 I will consider interest on my debenture। Working note number 6 we are doing, students, for interest calculation on 31st December 2003। I need to find out how much amount of debentures are outstanding on this date। If I look at the debenture account, debentures outstanding on the current date is 9 lakhs। How 9 lakhs sir? 10 lakhs minus 1 lakh। तो 9 lakh का total debentures are there। Out of that certain debentures are belonging to us, that is own debenture, and certain debentures are outsider। So we need to see the own debenture account।
अगर मैं ओन डिबेंचर अकाउंट देखता हूं तो मेरे पास प्रेजेंटली 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स है, ओन डिबेंचर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, अपना ओन इंटरेस्ट आ गया 24,000 और आउटसाइडर को इतना देना है। जो ओन है उसका एंट्री क्या आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट। तो मैं एंट्री लिख रहा हूं यहाँ पे, और ये आउटसाइडर है उसको तो पे करना पड़ेगा। मेरा एंट्री आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग को ये एंट्री को पोस्ट करना है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर एंड टू बैंक। Interest on own debenture account will be created in your own debenture account only. Right, so we have created interest on own debenture account, of course as per working note number 6। due to lack of space मैंने वहां पे working note number नहीं लिखा है, but just as a shortcut मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6th number working note था आपका, ठीक है, only for your knowledge, बाकी कोई जरूरत नहीं था। On this day, after the payment of interest, we have redeemed the outside debentures, of course we have repaid them, and for own debentures we have to do a cancellation entry। cancellation entry क्या आता है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट एट अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी कैंसल्ड इज 2 लाख। तो वही मेरे लिए क्या कंसीडर हो जाएगा, वही कंसीडरेशन मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में मैं लिख देता हूँ सेम डेट पे बाय 12% डिबेंचर अकाउंट कैंसल्ड, 2 लाख रुपीज का फेस वैल्यू और 2 लाख रुपीज का लाइबिलिटी विल बी कंसिडर्ड लाइक अ सेल प्राइस ओनली। We purchased these debentures at what price? We purchased it for rupees 2,12,000. We are cancelling only 2 lakhs. That means 12,000 का loss will be debited to profit and loss account. तो here same date I am writing here by P&L account, जो आपके लिए लॉस है, जो आपके लिए क्या है, लॉस है। ये लॉस में यहाँ पे 12,000 लिख देता हूं। How 12,000 has come? 2,12,000 minus 2 lakhs बराबर है 2,12,000 हम लोगों ने आउटसाइडर को दिया था, लेकिन लाइबिलिटी कैंसलेशन सिर्फ कितने अमाउंट का हुआ है सर, 2 lakhs का। तो इन दैट वे 12,000 का लॉस। इन दैट वे वी हैव कैंसल्ड द डिबेंचर्स व्हिच वी वेर होल्डिंग, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा 31 दिसंबर X3 को। That means for outsider we have to pay 7 lakh rupees का face value. Importantly, we have to redeem the debentures at rupees 5 premium. That means we have to pay them at 105. तो जब आप रिडीम करोगे आउटसाइडर को तो आपका एंट्री कैसे बनेगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो मेरे पास 2 और अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट एज वेल एज डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट में बना रहा हूं, ठीक है। Students, what entry I told you we need to pass? डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट में पहले ही क्रेडिट कर देता हूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो वी आर क्रेडिटिंग हियर
12% डिबेंचर्स अकाउंट। इंपॉर्टेंटली ये डिबेंचर होल्डर आउटसाइडर है, तो ये 7 लाख रुपए उनको ड्यू था। अलॉन्ग विद दैट उनको प्रीमियम देने का है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर डिबेंचर, सो कैनॉट आई से इट इज 5%, दैट इज इफ आई काउंट करेक्टली देयर आर 7000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 5 आई नीड टू पे। Second effect of this, 12% debenture account will be debited with rupees 7 lakhs. Redemption 7 lakhs. In this way, your debenture account get closed at 10 lakhs rupees. 10 lakhs रुपीज, तो डिबेंचर अकाउंट खत्म हो गया। डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया है, अब इनको पे करने के लिए आप डेबिट करोगे। बिफोर दैट ये प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर। डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना प्रीमियम पे किया आपने सर? 35,000। ठीक है, अभी आप डिबेंचर होल्डर्स को पे करोगे तो एंट्री क्या आएगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे आपने उनको पे किया तो आपका डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी क्या हो जाएगा सर? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस। $35,000 आपने पीएल अकाउंट में डेबिट किया। इन दिस वे टेक्निकली ये क्वेश्चन खत्म हुआ है, लेकिन आपके क्वेश्चन का एक पार्ट ये भी था, आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएल अकाउंट दिखाने के हैं फॉर ऑल 3 इयर्स, सो वी विल प्रिपेयर दैट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000x1, पहला ईयर आपका था। Now if I talk about first year 2000x1, ये साल में पीएल अकाउंट में कौन सा डेबिट क्रेडिट हुआ है वो देखना पड़ेगा आपको। इफ यू कंसीडर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये पीएल अकाउंट में एज अ फाइनेंस कॉस्ट आता है। ठीक है, अच्छा लास्ट ईयर का अकाउंट अपना क्लोज करना रहेगा, तो अभी ये देखो वो भी क्लोज कर देता हूं मैं। ये सभी के सभी इंटरेस्ट जब आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे उसका हेडिंग आएगा फाइनेंस कॉस्ट। रिस्पेक्टिव ईयर में तो आपके पहले साल में आपको डिबेंचर इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो फाइनेंस कॉस्ट आएगा। उसके अलावा पहले ईयर में कहीं पे भी पीएल अकाउंट हम लोगों ने यूज नहीं किया, तो आपके एक्सपेंस सेगमेंट में ये आता है। अंडर एक्सपेंसेस वी विल राइट फाइनेंस कॉस्ट। Under finance cost, we will write debenture interest. Since there is only one item, I will write directly in the bracket. That's it. इतना ही आपको डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में लिखना है, रादर फाइनेंस कॉस्ट लिखना है, और यही अपने लिए एक्सट्रैक्ट है फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। सेकेंड ईयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट
और P&L account statement for the year ended 31st of December X2. By the way, before I proceed, ये सब जो है वो क्या है सर? एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा P&L अकाउंट नहीं है. If I look at the year 2000 X2, once again I have only debenture interest. ओन डिबेंचर हमारे पास था, लेकिन यहाँ पे कोई पीएल अकाउंट में क्रिएट नहीं हुआ. हाँ, यस, इफ यू सी द ओन डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर अकाउंट में से इतना अमाउंट पीएल अकाउंट में चला गया था, तो ये अदर इनकम आएगा. ये क्या आएगा सर? अदर इनकम. ठीक है, तो अभी पीएल अकाउंट में दो आइटम आ गए, एक है इनकम वाला और एक है एक्सपेंस वाला. सो लेट अस शो दैट. So in the year 2000 X2 we have income as well as expense. So I will show income first. Under incomes we will have the heading other income. Only one item to be shown, so I am not making note, I am just putting in the bracket. Interest on loan debenture, transferred amount is 4,500. Under expense we will have a heading finance cost. Debenture interest. Look at year number 2, that is year 2000 X2. How much amount is transferred to PL account for debenture interest? 1,20,000. Total. Okay. Third year again, statement of profit and loss or profit and loss statement for the year ended 31st of December 2003. Again extract. Right. So in the year 2000 X3, what will be your income? Let us try to find out. ठीक है, इनकम फाइंड आउट करते हैं. कौन सा इनकम पीएल अकाउंट में चला गया है. बाय द वे, इफ आई हैव नॉट येट क्लोज द अकाउंट, बट इफ आई क्लोज द अकाउंट आई विल गेट द नेट इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट. तो ये अकाउंट अभी तक क्लोज नहीं हुआ था, मैं क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे अभी. ये 18,000 का इंटरेस्ट हम लोग पीएल अकाउंट में लेंगे एज अदर इनकम. और एक बात पीएल अकाउंट में चला गया था, ये है प्रॉफिट ऑन सेल. ये भी अपने लिए क्या बनेगा? अदर इनकम. ठीक है, लॉस ऑन सेल विल बिकम योर अदर एक्सपेंस. ठीक है, लॉस ऑन सेल अदर एक्सपेंस बनेगा आपका. तो ये आप अदर इनकम में रखोगे, बराबर है. पीएल अकाउंट आपने डेबिट यहां पे किया था, ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा, ये भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा. लॉस ऑन कैंसलेशन. ठीक है, ये सब आपको पीएल अकाउंट में डेबिट करना है, दैट इज एक्सपेंस कंसीडर करना है. और डिबेंचर इंटरेस्ट, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट है. तो आपको क्या क्या दिखाने का, लेट अस समराइज. इनकम में अदर इनकम आएगा, एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट आएगा और अदर एक्सपेंस आएगा. ठीक है, जिसके लिए आप नोट नंबर 1 बना रहे हो यहाँ पे. सी वी आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रैक्ट, तो नोट वी आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस.
2000 X3 के लिए आपका डिबेंचर इंटरेस्ट बनता है 1,11,000। अदर एक्सपेंस के लिए हम लोग नोट नंबर 2 बना देंगे। तो अभी इसको नोट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। अदर इनकम्स में कौन सा इनकम आएगा सर? अदर इनकम्स में आपको पहले लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, $2,013 interest on own debenture transferred to P&L account 18,000. Next is profit on sale of debentures, own debentures. Profit on sale of own debentures. Your profit is 10,500. Alternately, profit and loss can be set off and we can show the net effect also in P&L account. So keep in the mind. Other expenses के लिए अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? लॉस ऑन सेल, ये हम लोगों ने सेल किया था, उस टाइम पे लॉस हुआ था 4,000। रिपीट स्टूडेंट्स, आई नीड टू राइट हियर लॉस ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। कितना लॉस आपको हुआ था? ये 4,000 और ये 12,000। लॉस ऑन कैंसलेशन आपको हुआ था टोटल 16,000, बराबर है। इसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपने पे किया था वो भी यहां पे आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जो आपने पीएल अकाउंट में डेबिट किया था वो, ये हो गया आपका लॉस। देन आई एम टेकिंग अ टोटल। टोटल 51,000। तो आपका टोटल ऑफ एक्सपेंसेस कम्स टू 162,000। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पीएल अकाउंट। तो काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी था प्रेजेंटेशन वाइज, लेकिन मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग में ये क्वेश्चन कहीं पे भी डिफिकल्ट था। माय सजेशन इज फर्स्टली गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन, सॉल्यूशन एक बार आप वापस देख लेना। फिर भी कोई डाउट होगा प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल लाइक टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ लॉट ऑफ पेशेंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।